हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का मार्केट डिस्कस करते हैं, कुछ स्टॉक्स निकालते हैं, कुछ बात करते हैं कल के ट्रेडिंग की। राइट, आज बात करते हैं मार्केट में क्या हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी हैड अ गैप अप ओपनिंग। अगर आप नोटिस करेंगे स्क्रीन पे, देयर इज अ गैप अप ओपनिंग दैट इज हैपनिंग, and after that market could not sustain itself. Right, somewhere here the opening happened at 35,977. After that it went slightly up and then it came down. Bank Nifty could not hold itself. Right, so Bank Nifty was slightly weaker, whereas Nifty looks pretty much strong. Right, if we have a look at Nifty today, Nifty was very strong. Right, first reason is that it has overcome the past barrier. आज बहुत मजबूती के साथ इसने अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक किया है। गैप अप ओपनिंग हुई और ओपन इक्वल टू लो से लेके इट वेंट टिल अबाउट अनदर 300 पॉइंट्स, राइट, व्हिच इज 1666 और 166673 तक ऊपर गई है निफ्टी। एंड निफ्टी हैज काइंड ऑफ फिल्ड अप दिस गैप। राइट, ये जो गैप एग्जिस्ट कर रहा था काफी दिनों से, almost like for 1 month, whatever this gap was, Nifty has kind of tried to fill it up, right? So Nifty looks very strong and Bank Nifty looks weak. Now इसी बात को हम कोशिश करते हैं समझने की निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। एंड हियर इज निफ्टीज ऑप्शन चेन ऑफ 2 जून, राइट। अब आई वुड लाइक योर अटेंशन। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग देखें कि यहाँ पे ह्यूज कॉल अनवाइंडिंग हुई है। राइट, यू विल सी ऑल माइनसेस देयर। माइनस का मतलब है कॉल अनवाइंडिंग होना, राइट। एंड at the same time huge amount of call writing has happened here. That means there is a boundary to Nifty at 16,700, right? Also I want you to see one more thing, that today there are these 28,247 contracts. There are these call options which have been written at the price of 16,650. Even at 16,600 there is 3,000, which is not a very big sum, but definitely there has been some call writing which happened in the money space. Right, now have a look at what is happening on the put side. अगर आप put में notice करेंगे तो there has been a kind of base that has kind of formed here. Right, अगर आप notice करेंगे यहाँ पे एक base formation हुआ है by put writers. Right, ये जो put writers active है यहाँ पे, they are actually forming a very strong base. Now exactly same thing, I want to see what is happening towards the June end. Right, June end में क्या activity हो रही है। अगर आपको मैं ये चीज दिखाना चाहती हूँ, आप लोग शायद देखेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा समझ में आए। यहाँ पे 5,296 contracts have been written today at 16,600. इसका मतलब क्या है कि कोई इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर और ट्रेडर ये समझता है कि निफ्टी को 16,600 पे एक रेजिस्टेंस लगेगा, और दैट इज व्हाई दिस 5,296 contracts have been written. Right, similarly if you notice here at 16,500 there is huge amount. At the same time, you know, at 16,600 there is 7,517 contracts written on the put side. That means these are straddles which are working. 16,600 के straddles write किए गए हैं, and that is why there is huge open interest at 16,600. So by looking at it, what I can say, market looks range bound, but let's see how market goes, how option chain develops. Now similarly, let's have a look at the Bank Nifty, what is happening in the Bank Nifty's weekly expiry, and then we'll go and see what is happening in the Bank Nifty's monthly expiry. So this is 2nd June expiry. If I see here today, there has been a lot of unwinding happened at this place. Right, focus yourself at this place. यहाँ पे focus करिए आप लोग और देखिए कितनी ज्यादा अनवाइंडिंग हुई है। राइट, और ऊपर की तरफ यहाँ पे एक कॉल राइटिंग हुई है। दैट मीन्स बैंक निफ्टी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है एट 36,000। राइट, इसी तरह अगर हम देखना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे बनता है आज की डेट में, बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट भी इसी जगह बनता है, विच इज 36,000. So Bank Nifty will also remain kind of range bound till the expiry. Of course the market change, कल मार्केट खुलेगा, परसों मार्केट खुलेगा, देखते हैं कैसे ऑप्शन चेन चेंज होती है, और उसके बाद we'll be able to see the difference. Right, now this is the month end expiry of Bank Nifty.
So have a look at Bank Nifty's month and expiry. Call unwinding happened at 35,000, right? Here is call unwinding. Here is call unwinding at 35,500. There is call unwinding at 35,800, 35,600. And at the same time, if you see, there is put writing happening at 3251, right? Put writing happening at 3251. In the money put writing हो रही है. And what does that indicate? What does in the money put writing indicates? It indicates a strong support is getting built up at the place of 36,000. तो बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी लगता है वो लगता है कि 36,000 के आसपास होगा, वेरएज निफ्टी का एक्सपायरी लगता है 16,600 के आसपास होगा, राइट? अब इस इंफॉर्मेशन के साथ चलते हैं, हमने कल के लिए कुछ स्टॉक्स ढूंढ के निकाले हैं और उनके ऊपर बात करते हैं. So my first stock is Reliance, right? Reliance we have given today itself, but again it looks very promising. Have a look at the price. I'm going to show you with the help of a channel. Just have a look at the, so this is a channel that is formed, and above this place only, above 2676 only, Reliance looks good to me for a buy, and our target could be till about 2724, almost like 50 points from wherever we stand are looking very, very promising. So Reliance is my first stock. The second stock that I have on my radar is BSoft. In fact, all the IT stocks have recovered from the lower levels, right? There's a recovery that was seen in all the IT stocks. तो आज मार्केट को अगर कोई चीज होल्ड कर रही थी तो वो होल्ड कर रही थी निफ्टी IT कंपनीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रही थी. So this is BSoft में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है अबव 380, राइट? 380 के ऊपर हम BSoft में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. फिर उसके बाद एक और स्टॉक में मुझे दिख रहा है Pidilite, right? Pidilite also looks very, very good to me to buy above today's high, right? यहाँ पे कहीं पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है 2232, राइट? 2232 के ऊपर हम इसमें बाय कर सकते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक दैट इज ऑन माय रडार इज सिप्ला, राइट? सिप्ला also looks very, very good. Have a look at Cipla, how it has demolished the previous uncertainties. किस जगह के ऊपर बाय कर सकते हैं? 995. You got to be very careful because at 1000 there will be a lot of call writers who will be active. So अगर 1000 क्रॉस करता है, 5-7 मिनट 10 मिनट रुकता है वहां पे, then it is going to be having a target of about 1040, right? So Cipla looks very good to me. And then उसके बाद लास्ट स्टॉक जो है मेरे रडार पे वो है PFC. But along with it, all the IT stock, whether it is Coforge, whether it is LTTI, LTTS, or it is Infi, Wipro, HCL Tech, or it is TechM, any stock, you name it, actually are recovering from the bottom. So almost all of them are giving very, very good opportunity to take entry. So this is PFC. PFC looks good for a buying opportunity above 111. अगर ये 10-15 मिनट 111 के ऊपर रहता है स्टॉक, you definitely can take an entry, right? So my radar, my list is basically Reliance, BSoft, Pidilite, Cipla, and PFC. But beyond that, all the IT stocks also are looking very, very good. And guys, we do live trading every day from 10 to 11. Join us. You know, in the live market, we did such beautiful trades. People made huge amount of money. You have to only come and learn along with us, earn along with us in the live market. And with this, I'm signing off, your host, Dr. Seema Jain. Remain connected on our Telegram channel, remain connected on our YouTube channel. Please like, share, and subscribe. And I'll continue making the best content for you. All the best. Take care. See you on my Telegram channel.